Hi, welcome back again. And yes, I hope that your day was going well. And yeah, it's the afternoon now. Let's start again with a new topic today. So आज क्या पढ़ने वाले हैं? We are now gonna start with STIs, means sexually transmitted infections, which are also called RTIs, means reproductive tract infection, or VD, means a venereal disease. So let me tell you what's VD actually. So VD is a venereal, means a skin related disease, because when like we have heard of dermatologists like the skin doctors, so they have also the name associated venereal to them. So obviously the venereal disease means it's kind of skin infections in this occur because the irritation or itching, that kind of things happen in this. Okay, सो STIs के हम पहले नाम देखते हैं. तो हमारा पहला नाम है गोनोरिया, जो कि कॉज करता है पैथोजन नीसिया गोनोरिया, और ये एक बैक्टीरिया है. जेनाइटल हर्पीज जो होता है वो HSV पैथोजन से कॉज होता है, जो कि एक ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस है. और जो हमारा ये भी हमारा तो इनके हमने इसमें कह ही दिया कि HSV है, मीन्स ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस है. तो ऑब्वियसली ये क्या है, वायरस है. जेनाइटल हर्पीज जिससे कॉज होता है वो क्या है, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस HSV. लेट्स लर्न टुगेदर, राइट. सो पहला हमारा क्या था, गोनोरिया. कौन कॉज करता है, निशेरिया गोनोरिया. ओके नाइस. किससे कॉज हुआ, बैक्टीरिया से. वेरी गुड, आई न्यू इट, यू आर डूइंग. जेनाइटल हर्पीज की बात करते तो किससे हुआ, HSV से हुआ. HSV का फुल फॉर्म ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस. या इट्स अ वायरस. वेरी गुड, आई न्यू दैट यू वुड डू इट सो वेल. एंड ओके, नेक्स्ट वन जेनाइटल वॉर्ट्स. ठीक है, तो पहले वाला हमारा क्या था, जेनाइटल हमारा हर्पीस था, और ये वाला हमारा है जेनाइटल वॉर्ट्स. तो जब जेनाइटल वॉर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मीन्स HPV, मतलब ये भी हमारा वायरस ही कॉज करता है. तो जेनाइटल हर्पीज के लिए HSV और वॉर्ट्स के लिए HPV. मीन्स जब H आएगा तो S आएगा, HS. और जब हमारा W आएगा तो हमारा P आएगा, WP. हाँ, PW है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं. जब PW तो HPV है, तो P के साथ W आएगा, मतलब कि जेनेटल वॉर्ट्स आएगा. आई नो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, एंड या वी ऑल रिस्पेक्ट अस, सर. ग्रेट. Because every teacher has to respect, because they all time give their 100%, whatever be the matter, wherever viewers, means like it's not like comparison thing, right. सिफाइलिस का क्या होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम. कौन कॉज करता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम. अब नाम तो सुन के उसमें वायरस आ नहीं आ रहा, तो कह देंगे बैक्टीरिया है, राइट. बैक्टीरिया ही है, आई एम नॉट जोकिंग अराउंड इट. अब है ट्राइकोमोनियासिस. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स नाइदर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नॉट बाय वायरस, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. ठीक है, तो प्रोटोजोआ कौन क्या कॉज करता है, हमारा ट्राइकोमोनियासिस. ट्राइकोमोनियासिस और कैलमाइडियासिस जो है वो किस पैथोजन से होता है, कैलमाइडिया ट्राइकोमैटिस, जो कि एक बैक्टीरिया. क्या है, कैलमाइडिया ट्राइकोमैटिस. ठीक है. हेपेटाइटिस बी जो है वो HBV से होता है, जो कि हमारा होता है हेपेटाइटिस बी वायरस. ठीक है, तो ये भी एक वायरस है. एड्स भी हमारा वायरस से होता है, जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. इबोला भी एक वायरस होता है, जिसको इबोला वायरस, तो ये भी एक वायरस. ठीक है, सो वी गेट ऑल दिस थिंग्स. तो बताओ गोनोरिया किसने कॉज किया था, निशेरिया गोनोरिया. ओके, लेट्स वी आर डूइंग द वन वे सेक्शन, राइट. टेल मी व्हाट द गोनोरिया वाज कॉज्ड बाय, निशेरिया गोनोरिया, राइट. नाउ टेल मी व्हाट्स द मीन्स बैक्टीरिया और वायरस. या इट्स बैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट genital herpes. So when you talk about genital herpes, so it is caused by genital herpes. H is coming, okay, will be there. So HSV means human simplex virus. Good, virus, it's a virus. Good, you're doing well. Now next we are talking about genital warts. Okay, genital warts, W. P would come, HPV, human papilloma virus. Very nice. And okay, then let's talk about syphilis. Syphilis is caused by this name is Treponema pallidum. Treponema pallidum. And trichomoniasis, Trichomonas vaginalis, Chlamydiasis, Chlamydia trachomitis. Hepatitis B by HBV, hepatitis B virus. So I guess three names are a bit difficult to learn. Syphilis, Treponema pallidum. Treponema pallidum. It's caused by bacteria. Treponema pallidum caused by bacteria. Good. Now trichomoniasis.
is caused by Trichomonas vaginalis and it's a procedure. Good. Chlamydiasis is caused by Chlamydia trichomatis. Trichomatis is a bacteria, right? Chlamydia trichomatis. Okay, good. So vagina, cervix, and uterus. So it means this STI include these reasons, and that's why they're called as the reproductive tract infections too. Means STIs also have the other name RTIs or venereal disease. I told you earlier in the right. Okay. So oncogenic virus भी कहते हैं because virus that causes cancer. Itis is used means like hepatitis we are using, right? So itis is used for inflammation, and here is hepat means we know hepatic is used for the liver. So yes, in this liver inflammation occurs, and it's important information to note down. I would suppose you do. Hepatitis, so hepa is for liver, itis is for inflammation, and liver inflammation is hepatitis. स्टेराइज्ड नीडल से नहीं फैलता, ओनली फ्रॉम इन्फेक्टेड नीडल. जो हमारा ईड्स होता है वो कैसे फैलता है? ईड्स इज मोस्टली ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लूइड मटेरियल्स लाइक ब्लड, सीमेन एंड ऑल. ठीक है, सो ऐसे होता है. HCV, HPV. तो मोस्ट फैटल डेडली STD कौन से होते हैं? हमारा एड्स होता है. भाई अगर तुम्हें एड्स हो गया ना, समझ लो तुम मरने वाले हो, एंड दैट्स द ट्रुथ. It's the truth, yeah. And this how my teacher told me. Genital herpes, hepatitis B and AIDS जो होते हैं उन्हें curable नहीं होते हैं. अगर तुम्हें एक बार genital herpes हो गया, मीन्स पीलू वाला नहीं, कुछ भी herpes, ठीक है. तो अगर तुम्हें genital वाला herpes हो गया, not herpes, right? Genital herpes हो गया, hepatitis B हो गया या फिर AIDS हो गया, तुम curable नहीं हो. You're not curable. So please avoid that. ज़्यादा ओवरएक्टिंग की नहीं करूँगी. Hepatitis B and AIDS don't specifically affect the reproductive tract. Hepatitis B और जो AIDS है वो specifically affect नहीं करते reproductive tract को, because AIDS जो होता है वो हमारा immune system को affect करता है, लेकिन जो hepatitis B होता है वो भी हमारा liver का inflammation करता है. But so it directly doesn't affect the reproductive tract, but yes, it's a sexually transmitted disease. That's why it's called STI. I hope you got that. So transmit through mainly hepatitis B and AIDS. Okay. Transmit through. So we talked about the STIs, and in that we will first mainly make our focus on hepatitis B and AIDS, how it's transmitted. So sexual route, obviously through body fluid, semen, and parenteral route. What would you guess that parenteral route कैसे मतलब ये transmit hepatitis B और AIDS जो है वो transfer हो रहा है parenteral route का? क्या guess करोगे? 5, 4, 3, 2, 1. I don't know if you have studied this topic, then you would know, but otherwise you don't know, because the parenteral route means blood route. So blood route, infected blood हो गया, infected needle हो गया, या surgical instruments हो गए जो किसी AIDS वाले person ने use किए. If you are made to use that, you are gonna also suffer with AIDS. Yeah. And the mother जो fetus जो होता है ये हमारा चाहता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो प्लेसेंटा था जब उसे न्यूट्रिशन, तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को. नॉट ऑल वायरसेस, ठीक है, नॉट ऑल डिजीजेस टू. तो जो कोई क्रॉस कर जाते हैं वो मदर से फीटस में भी आ जाते हैं. तो प्री नेटल ट्रांसमिशन हो जाता है थ्रू प्लेसेंटा, एंड इट्स कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन बिकॉज प्लेसेंटा इज प्लेस इन वर्टिकल वे, राइट. एंड पोस्ट नीटल ट्रांसमिशन होता है पोस्ट natal transmission. Natal means birth, means after birth transmission कैसे होगा? Colostrum से. As you have studied, if you had studied, colostrum is what the means when the baby is born. So the mother milk is fed to him or her, right? So that's the colostrum. That's the initial milk that mother is required to always feed her baby so that he can get supplied with all the kind of antibodies and doesn't suffer with in future. So yeah, it's like that, and can't transmit through kissing or inheritance genes, mosquito bite, hugging, sharing meal. This sort would not lead to transfer of these AIDS and all kind of STIs. I know you are confused in the point of the saliva. Isn't it also fluid? But no, dear.
Saliva would not lead to the transfer of AIDS and all. It's just a sexual route. Parental route means the blood route, and the mother to fetus. These are the routes that you have to keep in mind. Okay. So first thing in this video, I have told you about the STI's name, then the pathogen, then its type means bacteria, virus, or protozoa. Okay, tell me, what's the name of the STI that is transmitted through protozoa? Trichomoniasis. Right? Let me tell you, I have alleged no lies, right? तो उसके बाद हम लोग इस देखते हैं कि इनिशियल सिम्टम्स हमारे क्या आते हैं. अगर हमें कोई पर्सन अगर STI से सफ़र कर रहा है तो इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे? Itching, irritation, swelling, slight pain and fluid discharge would be increased. Itching, irritation means itching would be there, irritation would be there, swelling would be there, and slight pain would be there, fluid discharge would increase. Major symptoms. This in the initial stages it would be like the initial symptoms, but in the later stages the major symptoms would come out. And it's PID first one, pelvic inflammatory disease. Sorry. Ectopic pregnancy, abortion, stillbirth, infertility, certain cancer like cervical cancer. So see, if you are suffering with STI in the initial, you would only have some amount of aging. No, it wouldn't just cover you so much. You can't imagine also itching, irritation, swelling, and slight pain, fluid discharge would increase. But you all people take this all the things lightly. But yes, TIs out there too much. And yes, the people need to be comfortable. People need to be aware of that too. So major symptoms are PID, being a pelvic inflammatory disease. In that, like the irritation, itching sensation could be considered. And when you talk about the ectopic pregnancy, in that we have the implantation generally takes place in the uterus. But if it takes place in the fallopian tube, you know that the fallopian tube wouldn't be able to support the baby formation. Obviously, it's so thin. No nourishment, the mother would die. Ectopic pregnancy, implantation other than the uterus. And let me tell you, the fundus is the best site of implantation in the mother's uterus. Now next is abortion. Obviously abortion would occur if the implantation had occurred already and it would just fall down, so obviously it's abortion. Abortion occurs after implantation. Remember that. Stillbirth means a child is born and he's already dead. Infertility means the like uterus or fallopian tube would be such like cilia would be gone or all the other function would be gone and the female or the male would be infertile, means not able to produce any progeny in the future generation. Certain cancers like cervical cancer would also occur. Now talking about the population explosion, so in that we have three factors: natality, mortality, and migration. Obviously by natal I have told you it's the birth rate related, so natality means birth rate, mortality means death rate, and migration we have immigration and emigration. इमिग्रेशन में आते हैं लोग, इमिग्रेशन में जाते हैं लोग. तो पॉपुलेशन डेंसिटी जब हमें निकालनी होती है तो आते हैं तो इमिग्रेशन और बर्थ वाले को गिनते हैं, और जो जाते हैं उन्हें माइनस करते हैं तो डेथ रेट और इमिग्रेशन को माइनस करते हैं. तो इसका एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है कि जो हमारा एन टाइम प्लस वन पे ऐसे है तो एन टी जो पहले टोटल थे पहले से उनमें प्लस करेंगे बर्थ प्लस इमिग्रेशन और माइनस करेंगे डेथ प्लस इमिग्रेशन. अब जनरली हमारी जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो IMR और MMR कम होता है, मीन्स इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होता है और हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है. मेजर इनिशियल में ऑड नॉट मल्टीप्लाई. हाँ, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे हमें ऐड करना होता है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना होता. सेक्स रेशियो इंडिया की बात करें तो 9:27 फीमेल पर 1000 मेल है, और सेक्स रेशियो हरियाणा हमारे 870 फीमेल पर 1000 मेल है. एंड ड्यू टू फीमेल फीटिसाइड इतनी कम पर 1000 मेल में सेक्स रेशियो होता है क्योंकि पर 1000 मेल कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं. तो इंडिया में तो ठीक है 927 फीमेल मानते हैं, लेकिन हरियाणा में 870 बिकॉज द फीमेल फीटिसाइड रेट इज़ वेरी हाई इन हरियाणा.
सेक्स रेशियो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बाय 1000 मेल्स. Total number of females per 1000 males is what sex ratio called. So now talking on the next human health and disease chapter, we have health. So health was earlier explained by good humor hypothesis, which said that body is balanced by the humors. Humors don't mean, oh my clapping sensation is so good, I have a good humor means I'm healthy. No, it's not like that, bro. It's like that. See, balanced humors means body fluid. Here, the humor stands for the body fluid. So in the balanced humors, we have our blood, phlegm, yellow bile, and the black bile. The black bile, they considered that it was required for the body temperature. Means if the black bile would be high in a person, so if the temperature of the body of that person would be high, and when the yellow bile stands for the gastric juices that's present between that human being. And when you talk about the next, the phlegm, it's like a comparison to like our what we say mucus. And yes, the first one, we all are relatable with it, blood. So they consider that if these body fluids are balanced, so in this case, actually this light is reflecting now. Okay, so in this case, that it would be occur like a good human hypothesis. Right. So okay. सो ऐसा वो कंसिडर करते थे, पर इसे ना डिसअप्रूव कर दिया बाय ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवरी. ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की? विलियम हार्वे ने. और जब टेम्परेचर, जब थर्मामीटर की डिस्कवरी हुई तो ये चीज़ गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि ये भी देखा गया कि जिसमें ब्लैक बाइल ज़्यादा है उसका टेम्परेचर तब भी कम है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल हो. और WHO ने फिर अपनी नई डेफिनेशन दी हेल्थ की, कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ठीक है, तो ये ऐसे हमारे हेल्थ को उन्होंने डिफाइन किया. किसने? WHO ने. एंड माइंड जो होता है इन्फ्लुएंस करता है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम को, उससे हेल्थ इफेक्ट होती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड यस, दैट्स ऑल कंट्रीब्यूशन मीन्स ऑल थिंग्स. I just praise my teachers because they are so good. They taught me well, and yeah, I'm going to live with this life. Thank you so much.